Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. These days, we people are doing three-dimensional geometry, the core. If you remember, as you know that when a plane cuts the cone in two lines, and these two lines will be the generators, then how to find the angle between them. जैसा कि आप जानते हो, यदि कोई समतल किसी शंकु को दो रेखाओं में काटता है तो उन दो रेखाओं जो कि उसके जनक होते हैं, उसके जनरेटर्स होते हैं, उनके बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। कल हमने एक एग्जांपल लिया था, मैं उसको वापस रिपीट कर रहा हूं। If the plane ax plus by plus cz equals to 0 cuts the cone in two cuts the cone, write the equation of the cone, cuts the cone yz plus zx plus xy equals to 0 in two perpendicular lines, then 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C equals 0. Yesterday we did this question. We solved this question. If the plane cuts the cone in two perpendicular lines or two perpendicular generators, then 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C equals to 0. I explained when two lines are perpendicular, then condition of perpendicularity L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equals to 0. Now we generalize this one. Instead of, because this is a particular cone and definitely it is a homogeneous equation, so vertex of this cone is origin. Now I write it. If the plane ux plus b plus wz equals to 0 cuts the cone ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2zx plus 2xy equals to 0 in two perpendicular lines, then if the plane ux plus v1 plus wz equals to 0 cuts the cone in two perpendicular lines or in two perpendicular generators, then what will happen? As usual, we write one of the generators because you remember here it is vertex 0, 0, 0. Generators having direction cosines L1, M1, M1, and here it is L2, M2, M2. This is the angle theta, and cos theta is L1, L2 plus M1, M2 plus M1, M2. If theta is pi by 2, then L1, M2 plus M1, M2 plus M1, M2 equals to 0. Yesterday I explained. Our aim is not to calculate the separate values of this, separate values of this. We people are interested in this one, this part. कैसे किया था? एक जनरेटर ले लिया, किस तरह से? X upon n, y upon n, z upon n. Suppose this is one of the lines or one of the generator. कोई एक लाइन जिसका इक्वेशन लिखा, ये उस प्लेन में भी होगी
और उस कोण का जनरेटर भी बनेगी। तो इस पर कोई पॉइंट लूंगा के चुन करके, वो जो पॉइंट है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो एल एम एन में दो रिलेशंस मिलेंगे, एन को एलिमिनेट करूंगा, एल एम में रिलेशंस आएगा और उसको सिंप्लीफाई करके ये कंडीशन से अप्लाई करता हूं तो मेरे पास में ये रिजल्ट आता है। यही काम मुझे इसके लिए और इसके लिए करना है। ux plus vy plus wz equals to 0. So if I assume k, then it will be lk plus nk plus nk. So here I write ul plus vm plus wn equals to 0. Means for this one ul plus vm plus wn equals to 0, and here it is a u square plus b v square plus c w square plus 2f instead of x lk, so it is, and a l square plus b m square plus c m square plus 2f mn plus 2z and l plus 2h ln equals to 0. This is equation number 1 and this is number 2. कल वाला वीडियो जरूर देखना होगा आपको इसके लिए कि मैंने क्या किया था। L और M में दो रिलेशंस आ गए, इनमें से N को मैं यहां से एलिमिनेट करूंगा, तो यहां से N की वैल्यूज यहाँ पुट अप करके मेरे पास में L और M में एक रिलेशन आएगा, वो होगा क्वाड्रेटिक। तो उसके दो रूट्स होंगे और उसकी हेल्प से मैं जब इस कंडीशंस को अप्लाई करता हूं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो कंडीशन बनती है दैट इज 1/a plus 1/b plus 1/c equals to 0. इट विल बी दिस। लेकिन यही पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, यदि मैं इसके लिए लिखता हूं इस क्वेश्चन के लिए, तो जो कंडीशन बनती है दैट इज a plus b plus c into u square plus v square plus w square minus a u square plus b v square plus c w square plus c w square plus 2f vw plus 2z wu plus 2h uv equals to 0. ध्यान रखना ए बी सी वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, ये कोण का इक्वेशन है, ये प्लेन का इक्वेशन। इस प्लेन इस कोण को दो लाइंस में कट किया और वो दो लाइंस अर्थात जनरेटर्स यदि परपेंडिकुलर बनते हैं तो हमारे पास में ये आता है 1/a plus 1/b plus 1/c equals to 0. दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, लंबवत होने की शर्त। जिस तरह से 2D के अंदर दो लाइंस y इक्वल्स टू m1 प्लस c एंड y इक्वल्स टू m2x प्लस c, दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती है तो कंडीशन होती है m1 m2 इक्वल्स टू -1, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1। लेकिन हम 3D कर रहे थे, ध्यान रखना है 3D स्लोप्स नहीं है यहाँ पर है डायरेक्शन कोसाइंस l1 m1 n1 l2 m2 n2. So these two lines are perpendicular if l1 l2 plus m1 m2 plus n1 m2 equals to 0. जब मैं इस कंडीशंस को अप्लाई करता हूं तो मेरे पास में ये शर्त आती है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस प्लेन की जगह मैंने ये ले लिया प्लेन ux plus vy plus wz equals to 0, and instead of this cone I took ax square plus by square plus cz square etc. So if this plane intersects the cone in two lines and these two lines are perpendicular, ध्यान रखना मैंने perpendicular लिखा, उनके बीच का एंगल जो है वो 90 है। तो जब परपेंडिकुलर की मैं कंडीशन से अप्लाई करूंगा तो मेरे पास में एक रिलेशनशिप आएगा और वो रिलेशनशिप जो सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनेगा a plus b plus c u square plus v square plus w square minus a u square plus b v square plus c w square plus 2f v w plus 2 g w u plus 2 h u v equals to 0.
ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक्स वाई जेड को मैंने यू वी डब्ल्यू से रिप्लेस कर दिया है। तो इसको जनरली हम इस तरह से याद रखते हैं, और a प्लस बी प्लस सी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एफ ऑफ यू वी डब्ल्यू। f of u v means in this expression replace x y z by u v w, so you will find this one. This is v w, then this is w u, then this is u v. This is equals to 0. So if you remember this, then you can answer this type of question easily. उसमें एन को न तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, न रिलेशन लिखना, लेकिन शर्त ये है कि आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। यदि आपको ये रिलेशन याद है तो आप ये आंसर इमीडिएट कैलकुलेट कर सकते हो। आज हम इसको यूज करेंगे और ये प्रूव करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि कितना हेल्प करता है। ओके, सो लेट्स सी। जो कल क्वेश्चन किया था मैं उसको दोबारा कर रहा हूं, लेकिन इस कंडीशंस को सीधा यूज करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यदि याद नहीं रहता है तो आपको प्रोसेस याद रखना है। यदि आपके पास में टाइम हो तो आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हो, जैसे मैंने कल किया था। If ax plus if the plane ux plus vy plus wz equals to 0 cuts the cone ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2zx plus 2hxy equal to 0 in two perpendicular lines, then a plus b plus c times u square plus v square plus w square minus a u square plus b v square plus c w square plus 2f v w plus 2z w plus 2h u v equals to 0. This is the condition. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दो लाइन्स हैं 2D के अंदर y equals to m1x plus c 2D, and second is y equals to m2x plus c. Both lines are perpendicular, then m1 m2 equals to minus 1. 3D में L1 L2 plus M1 M2 plus M1 L equals to 0. कंडीशंस को अप्लाई करूंगा, सॉल्व करूंगा, फिर आंसर कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे पास में ये आंसर आएगा। ये आपको याद रखना है, जैसे आपने इसको याद रखा था वैसे मुझे ये याद रखना है। लेकिन किसके लिए? जब ये समतल इस शंकु को दो परपेंडिकुलर लाइंस में कट करता है और वो लाइंस यदि परपेंडिकुलर होती है, अब आपको क्या दे रखा है? गिवन प्लेन ये ax plus by plus cz equals to 0। तो जब मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो मेरे पास में a किसके इक्वल आता है? u के इक्वल, b किसके इक्वल आता है? v के इक्वल, c मेरे पास में किसके इक्वल आता है? w के इक्वल। सो गिवन plane that is ax plus by plus cz equals to 0, that means u is a, v is b and w is c. Compare this. Cone, what is the given cone? Here it is, that is yz plus zx
plus xy equals to 0. Therefore, a is 0, b is 0, c is 0. ax square plus by square plus cz square. So a0, b0, c0. F half coefficient of yz. So f half coefficient of yz, so it is half. G is also half. H is also half. Therefore, we get. This is the condition of perpendicularity. A plus b plus c. A plus b plus c. A plus b plus c. A0, B0, C0. So this part is completely 0. 0 plus 0 plus 0. Here it is. A0, B0, C0. U is A square plus B square. It is A square plus B square plus C square minus. Straight away you can write 0. A, what is A? 0. What is B? 0. Here it is 0. So it is 0 plus 0 plus 0. ये तीनों part 0. To F. What is F? F is half. So this 2 and this half is cancelled out. So it is 1. Then it is VW. What is VW? VW is BC. So it is plus BC plus CA plus AB. So we people are getting, therefore this is AB plus BC plus CA. Dividing the whole by ABC on dividing by ABC. What will happen? It is 1 upon C plus 1 upon A plus 1 upon B equals to 0. Hence proved. So any question which is based on this, you can solve easily by remembering this condition. यदि आपको कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी याद रहती है तो आप इसको अप्लाई करते हुए सीधा सीधा आप प्रूव कर सकते हो, सीधा सीधा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव में आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन कल मैंने इसके लिए भी कहा था कि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, आप इसके लिए सीधा कंडीशन से यदि याद रखते हो तो इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि मुझे करना है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। ओके, वी सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। The question is, if the plane ux plus by plus wz equals 0 cuts the cone ax square plus by square plus cz square equals to 0 in perpendicular lines, then prove that b plus c u square plus c plus a b square plus a plus b w square equals to 0. कहां से स्टार्ट करोगे? यहाँ से। If the plane this cuts the cone this in two perpendicular lines, then this condition holds. Okay, so this implies, therefore, a plus b plus c.
means coefficient of x square, coefficient of y square, coefficient of z square. Here it is a plus b plus c. So I write it a plus b plus c. U v w ux plus vy plus wz. It is also ux plus vy plus wz. So be the same. So it is u square plus v square plus w square minus au square plus bv square plus cw square. Then yz zx and xy be missing. इससे पहले yz zx और xy था, लेकिन अभी जो है वो एब्सेंट है, वो मिसिंग है. तो क्या करोगे? इनकी वैल्यूज क्या बनेगी? 0. सो दिस इज 0 0 0 0. So this implies u square. What is the coefficient of u square? A plus b plus c. So I write a plus b plus c. And coefficient of b square is minus a. So it is minus a times b square plus. Similarly, a plus b plus c, coefficient of v square, here it is minus b, and plus coefficient of w square is multiply होगा. So it is again a plus b plus c, and coefficient of w square is minus c. This is 0. This implies this and this cancelled out. Here b is cancelled out, c cancelled out, and here it is a u square, then it is v square, then it is w square. Okay. So this is b plus c into u square plus c plus a into v square plus a plus b w square a plus b 0. Hence proved. कितना इजी है. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में पूछे भी जाते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था. इसलिए ध्यान रखना है ये कंडीशन. जैसे आपने 2D में m1 m2 इक्वल्स टू -1, 3D में l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इक्वल्स टू 0 और a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 डायरेक्शन रेशियोज. सो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसके लिए? लाइंस के लिए. यहाँ लाइंस कैसे बन रही है? यह लाइंस जो है वो जब समतल किसी शंकु को दो रेखाओं में काटता है. when the plane cuts the cone in two lines and these two lines are perpendicular, then this condition holds. Using this condition we can solve this particular type of question. एक क्वेश्चन और करेंगे. Okay, let us see. These questions are very important. Let us see. Find the locus of the points from which three mutually perpendicular lines can be drawn to intersect the conic ax square plus by square
equals to 1, z equals 0. Okay. मैथमेटिक्स में जब भी आप क्वेश्चन करते हो, प्रॉब्लम को देखते हो, उसको समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, उसको बार बार पढ़ो। न्यूज़पेपर की तरह नहीं, न्यूज़पेपर की तरह उसको नहीं पढ़ना है। उसको जो है वर्ड टू वर्ड फाइंड द लोकस। पहला जो वर्ड है लोकस, किसका लोकस? पॉइंट का, बिंदु पर। लोकस मीन्स बिंदु पर। ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में। क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको 2Ds के जो मेरे वीडियोस हैं स्टार्ट वाले 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के, उनको देखिए। आप बार बार देखो, उनको कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होगा। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। यहां लाइन का लोकस नहीं है, लाइन नहीं घूम रही है। लोकस किसका? पॉइंट का। फ्रॉम विच, जहां से, इस पॉइंट से 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परस्पर 3 लंबवत रेखाएं, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द कोनिक। ध्यान रखना, ये कोनिक है, शंकु नहीं है, ध्यान रखना। कोनिक कैसे बनता है? जब शंकु को कोई समतल काटता है। When the plane intersects the cone, then pair of lines be obtained, 2 सरल रेखाएं मिलती है। सर्कल इज obtained, वृत्त मिलता है। पैराबोला इज obtained, परवलय मिलता है। एलिप्स इज obtained, दीर्घवृत्त मिलता है। हाइपरबोला इज obtained, अति परवलय मिलता है। ax square plus by square equals to 1, z equals to 0. 3 lines are perpendicular. I'll show you. Let me see. Here it is. It is just like this. These 2 lines are perpendicular. This angle is 90 and these 3 lines, look at, mutually perpendicular. This angle is 90, this angle is 90 and this angle is 90. एक तंबू की तरह दिख रहा है, टेंट की तरह। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी। कई मूवीज में यदि वो किसी पर्टिकुलर युद्ध पे बेस्ड है, आर्मी के टेंट लगते हैं या किसी और पर्टिकुलर पार्ट के लिए, तो आपने जो टेंट देखा होगा वो टेंट लगभग इस तरह से है। ये इसका वर्टेक्स है, शंकु, वर्टेक्स ऑफ द कोन। इस पॉइंट से 3 लाइन निकल रही है, ये तीनों लाइन आप देख सकते हो। 3 lines. The locus of the point from which 3 mutually perpendicular lines can be drawn. इस पॉइंट से 3 लंबवत रेखाएं निकलती हैं और ये तीनों लंबवत रेखाएं जो है इंटरसेक्ट द कोनिक, सांकव को काटती है। मीन्स ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, यहां सांकव, सपोज मैं इलिप्स बनाता हूं ऐसे, तो ये इलिप्स को काटते हुए निकलती है। अब ध्यान दो कि ये लाइंस यदि इलिप्स को काटेगी, इसका मतलब इससे जो सरफेस बनेगा वो शंकु बनेगा। तो शंकु की बात कर रहा है, तो ये शंकु का वर्टेक्स मींस किसका लोकस कैलकुलेट करना है? इस शंकु के शीर्ष का लोकस कैलकुलेट करना है। तो मैं उसको x1 y1 z1 सपोज कर लेता हूं, या अल्फा बीटा गामा, जो आपकी इच्छा आप सपोज कर सकते हो। तो मुझे x1 y1 z1 जिसका मुझे लोकस कैलकुलेट करना, मुझे उसमें रिलेशनशिप चाहिए, और x1 y1 z1 को मैं x y z से रिप्लेस कर दूंगा। लेकिन हो क्या है कि 3 लाइंस जो है वो तीनों परपेंडिकुलर लाइंस है। यदि 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती तो मेरे पास में कंडीशन है, अभी थोड़ी देर पहले, जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती है
कोई समतल किसी शंकु को दो परपेंडिकुलर लाइंस में कट करता है तो क्या कंडीशन बनती है, लेकिन जब तीन लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो कंडीशंस बनती है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। वापस आपको याद रखना है, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड c का मतलब कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। सो इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, coefficient of x square plus coefficient of y square plus coefficient of z square is 0, then three generators will be perpendicular. So if three generators are perpendicular, then coefficient of x square plus coefficient of y square plus coefficient of z square equals to 0। तो इस प्रॉब्लम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्टेक्स मान लूंगा, मुझे गाइडिंग कर्व दे रखा है, ये रहा गाइडिंग कर्व, आपके पास गाइडिंग कर्व दे रखा है, शंकु का समीकरण निकाल के परपेंडिकुलर की कंडीशंस ठोक दूंगा और जो रिलेशन आएगा वो x1 y1 z1 में आएगा। वो x1 y1 z1 को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, x y z से, तो मेरे पास में लोकस आ जाएगा। लेट अस प्रोसीड। ओके, सो हियर इज इट, वर्टेक्स x1 y1 z1 एज्यूम किया और ये मेरे पास में है गाइडिंग कर्व, दैट इज a एक्सिस को जनरेटर एज यूजुअल, ये काम आपको आता है, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। से दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या लिखो इसके, एल के प्लस x1 एम के प्लस y1 एन के प्लस z1, ये मेरा पॉइंट हो गया। फॉर सम वैल्यू ऑफ k इट विल बी दिस पॉइंट एज यूजुअल, जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, इसको सेटिस्फाई करेगा। सो इट इज ax square means a times x square means l k plus x1 whole square is b times mk plus y1 whole square equals 1 z, what is z, nk plus z1 equals to 0. This implies the value of k is minus z1 upon n. The value of k will be substituted here, यहाँ रखूंगा मैं, so it is a times l, what is k, minus z1 upon n plus x1 plus b times n times minus z1 upon n plus y1 whole square equals to 1. x1 minus z1 into l by n whole square plus b times y1 minus z1 n by n whole square equals to 1. ध्यान रखना, शंकु का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं पहले। We are calculating the equation of the cone, so we eliminate L and N. So what will happen? Using 2 in equation number 1 from first answer. Therefore, from first and second, चौक के खटखट की आवाज है, आई एम हेल्पलेस, क्योंकि ये आई डस्टलेस चौक है, तो थोड़ी सी खटखट आपको सहन करनी पड़ेगी, लेकिन आपको सीखना है। L by n, ध्यान रखो, L by n, ये रहा L, ये रहा है, इस L को मैं यहाँ भेजूंगा और ये जो टर्म है इसको मैं नीचे उतार दूंगा। So what is L by n? It is x minus x1 upon z minus z1. So here I write, and this is
x1 minus z1. L by n is x minus x1 upon z minus z1. इसके लिए लिखा, ध्यान रखना, होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स here it is a times b times y1 minus z1 m by n, so it is y minus y1 upon z minus z1 whole square equals to 1. It is this. This implies it is a times z x1 into z minus x1 z1 minus x z1 plus x1 z1 whole square plus b times b times. It is z1 is multiplied by this. It is y1 z minus y1 minus, then it is minus z1 y minus minus plus z1 y1 whole square equals to 1. Remember z, here it is, x here it is, y here it is, and here it is z. So this is the equation of the cone. This is the equation of cone whose vertex is x1 y1, जिसका जो शीर्ष है वो x1 y1 z1 है, लेकिन हमें इस शीर्ष का लोकस निकालना है। तो ये शंकु क्या कर रहा है? ये शंकु कह रहा है from which three mutually perpendicular lines can be drawn. Means this cone has three perpendicular generators. तीन, जैसे मैंने बताया था, this has three perpendicular generators, mutually perpendicular, परस्पर। This has three mutually perpendicular generators. Therefore, क्या कंडीशन बताएगी? Coefficients of x square plus coefficient of y square plus coefficient of z square equals 0. ये शर्त आपको याद रखना है, हमने इसको प्रूव नहीं किया था, लेकिन आपको याद रखना है, कंडीशन है ये। If a cone has three mutually perpendicular generators, that means three lines which are mutually perpendicular passing through the vertex, then this condition holds. So this implies कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, पूरा सॉल्व करूंगा टाइम कंज्यूम होगा और ये अनटाइडी हो जाएगा। एक्स को देखो मैंने गोला बना रखा है, हियर इट इज, तो ये ऊपर स्क्वायर है तो हर टर्म का स्क्वायर होगा। जब इस टर्म का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर ये माइनस z1 का होल स्क्वायर आएगा, तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो इट इज a टाइम्स स्क्वायर ऑफ दिस, इट इज z1 स्क्वायर। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस पूरे इक्वेशन में मुझे केवल यहां मिल रहा है। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस z1, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब आ जाओ y के पास, प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, यह ध्यान रखना यहां पर कहीं पर भी x नहीं है, y is here in the similar manner you can say it is
b times z1 square, coefficient of y, plus coefficient of x square plus coefficient of y square. Now coefficient of z square. Z square देखो कहाँ मिल रहा है? एक तो ये जगह z है और कहीं नहीं है, और यहाँ पर z है. Z का कोफिशिएंट क्या है? x1. So it is a times coefficient of z is x1. It is x1 square. यहाँ कोफिशिएंट क्या है? प्लस b times y1 square equals to 0. मैं दोबारा समझा रहा हूँ. कोण का इक्वेशन कैलकुलेट किया. एक कोण 3 जनरेटर्स रखता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर. This is the equation of the cone, and this cone has 3 mutually perpendicular generators if this condition holds. So what is the coefficient of x square? What is the coefficient of y square? You just find. And what is the coefficient of z square? Z square we are getting at this place and this place. दो जगह z मुझे मिल रहा है, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा then coefficient will be ax1 square and here plus b y1 square equals to 0. So this implies a x1 square plus b y1 square plus a plus b times z1 square equals to 0. a plus b z1 square equals to 0. काम हो गया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. किसका लोकस कैलकुलेट करना था? उस पॉइंट का जहां से 3 परपेंडिकुलर लाइंस निकलकर इस कोने को काटती है. दूसरे शब्दों में ये कहूं, we have to find the locus of the vertex of the cone having 3 mutually perpendicular generators. So this is the relationship. Therefore, locus of x1 y1 z1 is replace x1 y1 z1 by x y z. It is ax square plus by square plus a plus b times z square equals to 0. Remember, this is the homogeneous equation. This is the equation of the cone. So locus is again the cone having the vertex 0, that is 0 0 0. Okay, so this is the way to solve the question. So you remember two things. What will happen when 3 generators are mutually perpendicular, and what will happen when 2 lines are perpendicular? Means when a plane cuts the cone in 2 perpendicular lines, then what is the condition of perpendicularity? Thank you very much. Jai Hind.